Good morning, everyone. A very good morning to all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the ESE Officers Practice Series for Engineering Services Examination PYQ. Come on, everyone. Quickly join the session. We are about to start the first session for Power System. Come on, everybody. We will be beginning the first session of power system. Quickly join everyone. Chali. So without wasting any time, let me get started with the first problem. The load duration curve. This is from ESE 2001. Load duration curve of a power system is shown in the figure. The reserve capacity at 70% capacity factor. What is the reserve capacity if the capacity factor is 70%? Come on, everybody. So, beta, for reserve capacity, I need plant capacity. For that, I will need average. Now, average in case of a linear graph, is max plus min by 2. And capacity factor is 70%, which is average by capacity. Therefore, capacity is 100 megawatt. Now, reserve capacity is capacity minus maximum demand. Okay. So, 100 minus 90 is 10. B. Answer is B. Next. In pumped storage hydropower plant, ESE 2001, the electrical machine is made to work alternatively as a generator and motor. The efficiency of the generator working at the same electrical power is. If the electrical power is same, what is the efficiency of generator compared to a motor? For generator, electrical power is the output. For motor, electrical power is input. So this will be greater than motor. कैसे सर? आप मान लो बेटा P loss by P 0.1. Suppose P loss by P 0.1. तो 1 minus 0.1 is 0.9. This is 1 by 1.1 which is 0.909. आप P loss by P को 0.1 मान लो, 1 minus 0.1 0.9 हुआ, ये 1 by 1.1 हुआ, 0.909 हुआ. So this is greater than motor efficiency. Next, select the correct statements beta. ESE 2001. हाँ भाई, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था. नाउ आई बिलीव यू मस्ट बी एबल टू सी मी एंड हियर मी. So which are the correct statement? The purpose of moderator is to slow down the fast neutron. Yes. It must have a low molecular weight. Yes. Ordinary water. No. Multiplication factor is kept at unity. Okay. So it should be
it is not kept slightly greater than unity, otherwise chain reaction will be uncontrolled. Just a minute. ऑर्डिनरी वाटर यार कुछ जगह पे यूज होता है, बट मोस्टली हैवी वाटर यूज होता है. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. हम्म 1 and 2 ही होना चाहिए, बट इसका जो दे रखा है दैट इज 4 ऑल्सो. स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी लेके चल रहा है. लाइक कि 1.00001 इस टाइप से. इट्स नॉट लाइक कि 1.1 या 1.2. स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी मींस जस्ट अबव यूनिटी. चलिए. A generating station has a maximum demand of 30, load factor 60%, capacity factor 50%. The reserve capacity, this is ESE 2003. So the capacity factor is average by capacity and load factor is average by maximum. So reserve capacity is capacity minus maximum. Six megawatt. See, the answer is 6 megawatt. नहीं, K लेस देन 1 होगा तब तो रिएक्शन डाई आउट हो जाएगा रोहन भाई. ESE 2003. When a pumped storage power plant is operated in conjunction with a steam power plant, तो बताइए क्या होगा. ESE 2003, when you use the pumped storage plant along with a steam power plant, what happens? The load factor increases. Why? Because this will supply constant power and pumped storage will supply fluctuating load. Okay, it will supply fluctuating load. Okay, so that is why load factor of steam power plant will increase, because at constant power, the load factor becomes unity. Next, ESE 2003. Match the component with the material. Moderator. Control rod is always boron. Coolant can be sodium, liquid metal. Shield, concrete. Moderator, graphite. So 3142. Okay, 3142. Very good. Assertion reason ESE 2003. Hydroelectric plant with large storage can be used as base load plant having a high load factor. For a plant to be used as a base plant, the unit cost of energy should be low. बताइए. लार्ज रिजर्वॉयर वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेस लोड प्लांट की तरह यूज हो सकते हैं, और उसके लिए यूनिट कॉस्ट लो होना जरूरी है. तो आंसर इज डी. Because large storage, they can be used as peak load plant. And this is correct. Because when there is a large storage, then whenever required, you can give the supply. जब आपके पास स्टोरेज है तो जरूरत पड़ने पे आप पावर डेवलप कर सकते हो. दैट इज वाई पीक लोड प्लांट. ESE 2004. A pumped storage plant is a base load plant? No, it is a peak load plant. The starting time of a pumped storage plant is short, yes, and that is why it is a peak load.
Reversible turbine and pump are highly suitable. Yes, because reversible pump will allow us to push the water back into the reservoir or the storage. जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना पावर की, तब ये क्या करता है, पंप जो है, रिवर्सिबल पंप जो है, पानी को उल्टा भेज देता है वापस से स्टोरेज में. ओके, तो बेसिकली allows water to be pumped back to storage. So whenever you need power, you will allow the water to come from storage to turbine, and when you do not need power, you will pump the water back to the storage. ESE 2004, name with the feature. Name match with the feature. Match the name of the plant with the feature. थर्मल हैज अ हाई फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि आप इसको रेलवे रोडवे से ट्रांसपोर्ट करोगे. न्यूक्लियर हाई कैपिटल कॉस्ट, यू नीड अ हाई कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस. हाइड्रो इट हैज अ हाई प्लांट लाइफ. डीजल high operating cost because the fuel is the most expensive in a diesel power plant. कंपेयर टू जो वो एनर्जी जनरेट करेगा ना, उसका फ्यूल काफी महंगा पड़ता है. आप कहोगे सर न्यूक्लियर तो उससे भी महंगा है, बट द एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर इज वेरी वेरी हाई, so the cost is adjusted. Okay, next, match the turbine with the height. ESE 2004, match the turbine with the height. Low head, propeller or coupler. Medium head, coupler or Francis. High head, Francis or Pelton. Very high head, Pelton. Okay, okay. Very high head is Pelton. ESE 2005, on which of the following cycle does a steam power plant work? स्टीम पावर प्लांट थर्मोडायनेमिक्स की किस साइकिल पे काम करता है? रैंकिन साइकिल. यस. अगेन मैच द कॉलम. लो हेड, प्रोपेलर कपलन. मीडियम कपलन फ्रांसिस. हाई हेड फ्रांसिस पेल्टन. वेरी हाई हेड पेल्टन. Okay, ESE 2005, same question. Consider the following statement. ESE 2005, a pumped storage is suitable for supplying peak load. Yes. During peak load, why water is pumped back from the tail race to the head water? No. Water comes down. वाटर को वापस थोड़ी भेजोगे भाई, जब लोड हाई है तब तो पावर चाहिए ना, तो वाटर विल कम डाउन. स्टार्टिंग टाइम इज वेरी शॉर्ट. करेक्ट. जब पीक लोड है तब पावर चाहिए तो पानी नीचे आएगा, जब पीक लोड नहीं है तब पानी ऊपर जाएगा. Which of the following is employed as or by CANDU type of slow thermal nuclear reactor? ESE 2006. CANDU type of reactor which is employed. What do you use? Heavy water. It is Canadian deuterium uranium. Deuterium means D2O, that is heavy water. Reserve capacity निकालिए. Find the reserve capacity. Maximum demand 15,000. Annual load factor 50%. Capacity factor 40%. Okay. So average load factor into maximum demand.
B. Okay. ESE 2006. A load factor is defined as the ratio of ESE 2006. Question 16 था बेटा. A power plant load factor is defined as the ratio of, it is the ratio of average load to peak load. Coming to 17, match the power station with the component. Hydroelectric power station 4 bay, nuclear power station. One type is pressurized water reactor. Steam power station, fluidized bed gasifier, that is a technology used for combustion of coal. Or pressure gasification, but I don't think this will be the case. This is greater and stroker, and this will be here. So 2314 B. Okay, 2314. Chale next. In hydropower station, what is the enlarged body of water just above the intake and used as a regulating reservoir called? एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इनटेक के जस्ट पहले जो रेगुलेटिंग रिजर्वायर का काम करती है उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज 4 bay. ओके सूर्या बेटा, इस सीरीज में काफी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं. आज से पावर सिस्टम स्टार्ट हुआ है. अगेन ESE 2006. फॉर अ वेरिएबल हेड ऑफ नियर बट लेस देन 30 मीटर विच टर्बाइन इज यूज्ड? कपलन. For low head, propeller or coupling. Okay, low head we can use propeller or coupling. ESE 2007. बेटा मैंने जो पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स कराया था टारगेट भाई, उसके अंदर सब कुछ है. जो वंदे भारत क्रैश कोर्स हुआ था, सब टाइप के रिजर्व मैंने एक्सप्लेन किया. हॉट कोल्ड स्पिनिंग, वो देख लो, नहीं तो गूगल करके पढ़ लो. ESE 2007. Total installed power capacity in India. ESE 2007. 125 gigawatt. Correct expression. ESE 2007 again. Correct expression for electrical power developed. It is this. Correct expression for hydroelectric power. Efficiency of a normal thermal station. Thermal station, what is the efficiency? It is about 30%. 29% is the exact number. It is about 30%. ESE 2007 again. In coal-fired thermal power station, what are precipitator used for? What are precipitator used for? To collect the dust particle from flue gases. Flue gases are the exhaust gases from combustion. बेटा चलता तो चैप्टर वाइज ही है, लेकिन हर सेशन में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता. मेरा टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चन पे होता है. Which of the following fuel is used by the slow thermal nuclear reactor for power generation? Slow nuclear reactor. Plutonium. We use plutonium. Pumped storage plant ESE 2007. What is correct? Reversible turbine are used, which are used as turbine during peak load and pump during off-peak hour. So during peak hours, water will run the turbine. Off-peak hours, turbine will feed the water back to the reservoir. ESE 2007. In the load duration curve for an integrated power system, the uppermost crest represent the energy contributed by which of the following? The maximum value represents the energy contributed by non-conventional. Conventional वाले क्योंकि base load बनते हैं. Conventional energy sources like hydroelectric, steam, thermal, all are base load. तो जो peak होती है that is non-conventional. 11:30 बजे का टाइम होता है सूर्या भाई.
Daily energy produced is 720 at a load factor 0.6. What is maximum demand? Maximum demand. The daily energy is 720. So daily energy is so average is 30. Hey, 50 megawatt. Take the density of water to be 1000. How much power is developed by a hydroelectric generator? W is the density, Q is the flow rate, H is the height, eta is the efficiency. So answer is C. C. अपर मोस्ट क्रेस्ट माने सबसे हाई वाली पीक शुभम भाई, ग्राफ की जो हाईएस्ट पीक होती है, क्रेस्ट माने पीक, अपर मोस्ट माने सबसे ऊंची जो पीक होगी पूरे ग्राफ में, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा वहां पे पावर कौन देगा, ये पूछा है। ESE 2008, consider the following statement regarding nuclear plant. It needs a moderator, correct. Multiplication factor is almost unity, yes. They are used as peak load, no, base load. Why? Because they cannot supply fluctuating load. अगर आप सोचोगे ना कि लोड फ्लक्चुएट हो रहा है, मान लो अचानक से ज्यादा पावर चाहिए, सडनली यू नीड मोर पावर, and if you think you can add more fuel to get more power, then beta there is a chance of nuclear reactor explosion. Okay, you can't just simply add fuel into a nuclear power reactor, no. ESE 2008, maximum efficiency of modern coal-fired steam raising thermal power plant is restricted to about 35%, mainly because of high energy loss in condenser. सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस कंडेंसर में होता है बेटा, वहीं पे उसी की वजह से एफिशिएंसी बहुत कम है। यानी जो आपने स्टीम बनाई ना, उसकी पूरी एनर्जी आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। यू कैनॉट यूज द एंटायर एनर्जी ऑफ द स्टीम और द बॉयलर आउटपुट, and most of the energy gets wasted. That is why. याद कर लो ना पीक लोड कौन से और बेस लोड कौन से, इतना ही तो करना है। ESE 2009, where is the draft tube of a hydro power station that is an airtight pipe located? Where is the draft tube? Near the runner exhaust and the tail race. Draft tube का काम क्या होता है? The purpose of the draft tube is to carry the water from the turbine, the used water, to the tail race. ESE 2009, steam power plant, maintenance and operating costs are low. Water is required in huge quantity, requires long time of installation. Handling of coal and ash can be done easily. So the answer should be B. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई क्योंकि फ्यूल चाहिए, वाटर इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, व्हाई? in order to cool down the steam, long time for installation, yes, and ash disposal is difficult, not easy. जो राख बनेगी उसको कहां फेंकोगे, वो मुश्किल है। ESE 2009, normal pH value that is to be maintained in a steam raising thermal power plant. What is the pH? 8.5. Remember this, pH is 8.5. Complete combustion of pulverized coal in a steam raising thermal power plant is ensured by what type of analysis of the gas going out by the chimney? Complete combustion कौन सी गैस के एनालिसिस से पता चलता है भाई?
सभी से, because in complete combustion these two gases should be very less. B and C. B and C should be very less. Okay. Consider the following statement regarding pumped storage ESE 2009. Which statements are correct? It is a peak load plant. Yes. Starting time long? No. जितने भी pumped storage होते हैं peak load होते हैं सभी का starting time short होता है. Reversible turbine and pump are used. Yes. Can be used for load frequency control. Can be used for load frequency control. For load frequency control, we need load sharing. I think this should also be correct. Why, sir? क्योंकि देखो load frequency control में होता क्या है समझिएगा. When the load on a power plant is very high, the frequency decreases, and there is a chance that it will lose synchronism. There is a chance that it will lose synchronism, and that is where you transfer the load to other power plant. You transfer some part of the load to the other power plant so that you can regulate the frequency or you can control the frequency. ESE 2009, maximum demand is 2 kilowatt, daily energy 30 unit, load factor. What is the load factor? See, 62.5%. ESE 2009, in what form of the initial energy will be released for the 200 mega electron volt per fission by a neutron in a slow thermal nuclear reactor? ये जो इनिशियल एनर्जी है किस फॉर्म में रिलीज होती है? It is kinetic energy of particle and electromagnetic radiation. न्यूक्लियर रिएक्शन से जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी और जो रेज होंगी गामा रेज जो होंगी उनकी एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी. ESE 2010, which of the following power station is used to cover the peak load? Peak load beta, pumped storage. Pumped storage is a peak load plant. ESE 2010, for a 3-element feed water control in a coal fixed thermal power station, measurement of level of water in boiler drum are made so that water level does not violate min and max limit. वाटर का जो लेवल है वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि छलक जाए, because it can be hazardous. It should not be below the minimum, otherwise steam will not be produced and you will waste the coal. So water should always stay between min and max. Again beta, ESE 2010, which statements are correct? Pumped storage plant when operated in interconnected power system serve to increase the load factor. Why? Because it can now supply constant load. स्टीम वाले से कांस्टेंट लोड ले लो, बाकी जो फ्लक्चुएशन है वो पम्प्ड स्टोरेज दे देगा. Pumped storage can take care of the variation in the load. It provides added capacity to meet peak load. Decrease load factor? No. No, not for base load. It provides the capacity for peak load. Okay. तो ये जो पीक लोड प्लांट होते हैं ना, इन्हीं की वजह से बाकी प्लांट कांस्टेंट पावर दे पाते हैं और उनका लोड फैक्टर हाई होता है. Consider the following statement which are correct. ESE 2010. Nuclear fission occurs when uranium reacts with a neutron. Correct. Nuclear fission is accompanied by the release of neutron and gamma rays. Correct.
above 200 mega electron volt of energy is released in the fission of a uranium 235. Energy from U-235 is released mainly as kinetic energy. So all are correct. All statements are correct. ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था ना एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है. ESE 2011, with reference to the hydropower station, the graphical representation of discharge as a function of time is known as. जो वाटर का डिस्चार्ज है, इट्स वेरिएशन विद टाइम इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ. वेरी गुड, हाइड्रोग्राफ. ESE 2011, 1 million cubic water, 1 million means 10 to the power 6, is stored in a reservoir. Water density is given, center of mass is given, energy. Simple. Potential energy, mass is volume into density. G is 9.8, center of mass 50. So this is 49 into 993. Hmm. 486. I need per hour, sorry, megawatt hour. Ten to the power 6 will become. So answer is A. Okay. आवर में जाने के लिए 3600 से डिवाइड कर देना. ESE 2011 for harnessing low variable water head. What is the suitable turbine? कपलन. लो हेड पे कौन सी टर्बाइन लगेगी? कपलन टर्बाइन. Next, in a thermal power station, a typical heat balance sheet for a large turbine and a surface condenser taken together is the percentage of heat distributed in. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हीट आपको बतानी है. ओके. तो हीट टू द सर्कुलेटिंग वाटर, दिस इज मैक्सिमम. वर्क डन सेकेंड, फ्रिक्शन विंडेज थर्ड, सॉरी, फ्रिक्शन विंडेज में जो जाती है वो लीस्ट होती है. मैक्सिमम हीट गोज टू द सर्कुलेटिंग वाटर, देन वर्क डन, then heat in the condenser, and the minimum is the friction windage. So 3142. ESE 2011, the radiation shield for a nuclear power reactor for biological safety is provided by having the reactor. बताइए, बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए रेडिएशन शील्ड कैसे देते हैं कि उसकी रेडिएशन बाहर ना निकले, बाकी लोगों को इंपैक्ट ना करे? बाय अ थिक कॉन्क्रीट वॉल. तो द पर्पस ऑफ कॉन्क्रीट इज टू अलाउ द बायोलॉजिकल सेफ्टी. हाँ बेटा, एई के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. ESE 2011 अगेन, अ पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ. बताइए. A pumped storage hydroelectric power plant consists of a synchronous machine, a turbine and a pump all on one shaft. पंप क्यों चाहिए? पानी को वापस भेजने के लिए. ESE 2011, economics of a power plant is influenced by. What are the factor on which the economy of a power plant depends on? Load factor, yes. Utilization factor, yes. Capacity, yes.
तो ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर. कितना खर्चा आएगा प्लांट का वो इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगा. ESE 2012, a Pelton wheel having a rated speed of 300 rpm is connected to an alternator to produce power at 50 hertz. What is the number of pole? ESE 2012. D. ESE 2012, in an interconnected power system, the most suitable plant to meet the peak load is pumped storage. Akhand bhai, all the best for SSC 2026. ESE 2012 again. The utilizable water from a catchment is 60 into 10 to the power 6 cubic meter annually. It has a head of 40 meter. The power that can be theoretically generated. So energy is mgh. Consider density of water to be 1000 kg per meter cube. Height is 40. Now this is the annual. So power is energy by time. (365 days), 24 hours. Each hour has 3600 seconds. Answer is D. 750 kilowatt. ESE 2012. Match the component with the material. This we have already done. Moderator, graphite, control rod, boron, coolant, sodium, shield, concrete. This is repeated 3142. Advantage of hydroelectric. ESE 2013. Advantage of hydroelectric over thermal power station. The operating cost is low because no fuel is required. Operating cost fuel पे depend करती है, fuel चाहिए ही नहीं. ESE 2013, a generating station has a maximum demand of 1000. Load factor and capacity factor is given. Find reserve capacity. Okay, 250 megawatt. In order to have lower cost of power generation, अगर पावर जनरेशन का कॉस्ट रिड्यूस करना है, लोड एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई. लोड फैक्टर हाई है, इसका मतलब क्या है? हाई लोड फैक्टर इंप्लाइज मैक्सिमम डिमांड इज लो.
therefore capacity is low. And high diversity factor implies maximum demand comes at different times. नॉट ऑल टुगेदर, सभी लोड का डिमांड एक साथ नहीं आता, अलग अलग समय आता है. तो अगेन कैपेसिटी रिक्वायर्ड इज लो. अगर सभी लोग एक साथ पावर मांगेंगे तो ज्यादा कैपेसिटी लगेगी, पावर प्लांट की कॉस्ट ज्यादा होगा. ESE 2014 thermal and electrical efficiency are 30% and 92%. Coal has a calorific value 6400. For the supply of full load rated capacity, the coal consumption would be coal consumption in kg per hour. Power is 100 megawatt. In 1 hour, energy is 100 megawatt hour. Efficiency, overall efficiency is basically multiplied. Okay. Now, what is the input energy? Hour is 3600 second. Now, in kilocalorie, 1 joule is 4.2 calorie. Sorry, 1 calorie is 4.2 joule. Okay. Now, coal is energy input by calorific value. ठीक है, एक कैलोरी 4.2 जूल होता है. ESE 2014 compared to turbine in conventional coal fired thermal station, nuclear power plant use steam at. ठीक है, कोल वाले के मुकाबले न्यूक्लियर प्लांट में स्टीम कैसी होती है? लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, थर्मल से लोअर प्रेशर होता है. मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा है ESE ने. करेक्ट ना? सच क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉमन. $125 megawatt. Surge tank is associated with which type of power plant? High head hydro power plant. Why high head? Because it has a penstock that has a chance of getting burst. इसके पास एक पेनस्टॉक होता है जिसका फटने का रिस्क होता है, तो उसे बचाने के लिए एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करता है अपना सर्ज टैंक. इट स्टोर्स द एक्स्ट्रा वाटर. Okay, next. In high level hydro station, the action of governor due to sudden change in load changes the water admitted to turbine blade, leading to water hammering effect on penstock. A surge tank in high head hydel station is used to absorb the flow variation. Absolutely correct, but not correct explanation. क्या हुआ देखो, ये कह रहा है जो हाई हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं, तो जो स्पीड गवर्नर होता है वो क्या करता है?
जैसे जैसे लोड वेरी करता है वो टरबाइन के वॉल्व या गेट को कभी कभी बंद कर देता है, ठीक है। तो टरबाइन में जाने वाला पानी चेंज किया जाता है एज पर द लोड वेरिएशन। यू चेंज द वाटर फ्लो टू द टरबाइन एज पर द लोड, ड्यू टू विच समटाइम्स देयर इज एडेड वाटर इन द पेनस्टॉक and it has high pressure called as water hammering effect. So to reduce this you use the surge tank, but this is not the reason for this, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, ये इसका सॉल्यूशन है ना कि इसका रीजन है। Compared to turbine in coal fired thermal station, ये तो रिपीट हो गया ESE 2015 में। Power output from a hydroelectric power plant depends on head, discharge and efficiency, ठीक है। This is discharge, head, efficiency. W is the density. Water की density तो वैसे भी constant ही मानोगे। ESE 2015 maximum demand and the number of kilowatt hour per year is given load factor. Energy is always average into duration. This is per year. How many hours are there in a year? 365 into 24. एक साल में कितने घंटे? 365 into 24, 513.7. Now, what is the load factor? .2054. B. ESE 2016. Air pollution due to smoke around a thermal power station can be reduced by installing रीजन थोड़ी हुआ भाई, वो कह रहा है कि पेन स्टॉक में वाटर हैमर इफेक्ट आ जाता है और सर्च टैंक उसकी रक्षा करता है। रीजन कैसे हुआ वाटर हैमर इफेक्ट का? वाटर हैमर इफेक्ट का रीजन पहली स्टेटमेंट में खुद ही लिखा था कि भाई जब जब आपका लोड चेंज होता है तो स्पीड गवर्नर पानी को चेंज करता है, जिस कारण से वाटर हैमर इफेक्ट बनता है। अब इसके लिए आप सर्च टैंक यूज कर रहे हो, सर्च टैंक इसका रीजन थोड़ी है। आप ये सोचिए, मैं कह रहा हूं पेन स्टॉक में वाटर हैमर इफेक्ट आता है, क्या इसका रीजन सर्च टैंक है? नहीं, सर्च टैंक तो बल्कि उसकी रक्षा करता है। So how to reduce the air pollution बच्चों? To reduce the air pollution we use electrostatic precipitator to remove the dust particle. Again ESE 2016, maximum demand and load factor is given annual energy. So average is maximum into load factor. Answer is D. Next, ESE 2017, the power available from the wind is directly proportional to V cube. Drag type wind turbine have lower speed and high torque capacity. Okay, ये बताइए, drag type wind turbine have higher speed and lower speed and high torque capability. तो इसका बी आना चाहिए यार। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके, बट दिस इज नॉट द रीजन। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल।
So answer should be B. तो देखो यार, बेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यस, क्योंकि लोड शेयर होगा तो किसी भी एक पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, बिकॉज द लोड विल बी शेयर्ड. Same total capacity can meet lower demand, not lower higher demand. Better coordination and energy conservation, yes. ESE 2016, consider the following losses for short circuit test. कॉपर लॉस, ये मशीन का आ गया. शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन से लॉस देखने मिलते हैं? कॉपर लॉस. करेक्ट. ESE 2019, in a three-phase 60 Hz 500 MVA 15 kV 32 pole hydroelectric generating unit, omega synchronous and omega m synchronous, 2 pi f 120 pi C. ESE 2019, reaction turbines are used for site with high head and low flow. High head and low flow. Kaplan and Francis turbine are reaction turbine. Which statement is correct? So answer is D. Kaplan और Francis तो reaction turbine है, लेकिन ये generally low head पे इस्तेमाल की जाती हैं. They are used as at low head. ESE 2020, स्टीम बॉयलर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्विक स्टार्टिंग एंड लोडिंग, यस. नो जॉइंट एक्सपोज टू फ्लेम, करेक्ट, because if the joint is exposed to a flame, it has a chance of a meltdown. It should be capable of burning low ash content coal. That means the efficiency should be high. Correct है ना, efficiency high होना चाहिए. मेन पार्ट्स ऑफ अ पावर स्टेशन, पावर सिस्टम के क्या मेन पार्ट्स हैं? ऑल द थ्री, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन. ESE 2020. In wind power, the speed which is considered as the most important parameter is, कौन सी स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है? टिप स्पीड. टिप मींस द स्पीड ऑफ द विंड एट द टिप ऑफ द ब्लेड. विंड की स्पीड जो ब्लेड की टिप पे होती है वो इंपॉर्टेंट है. द मेन फंक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इज टू, ESE 21, ट्रांसमिट एनर्जी विद मैक्सिमम एफिशिएंसी. ESE 21, the fill factor of a photovoltaic module is 0.8. A single cell has a open circuit voltage 0.6, short circuit current 8. It has 48 cells connected in series. Voltage at maximum power is 0.9 times the open circuit voltage. Current at maximum power is, बताइए. Voltage at maximum power is 0.9 times the open circuit voltage. What is the current at maximum power? तो देखो ये होगा fill factor VMIM VM by VOC is 0.9, ISC is 8. So current at maximum power is 7.11. Equivalent circuit of a photovoltaic module is present. Okay.
The requirement for more power. Requirement for more power. तो देखो यार, अगर आप चाहते हो ज्यादा करंट आउटपुट पे पहुंचे तो RSH मस्ट बी हाई, क्योंकि अगर RSH लो हुआ ना तो ज्यादातर करंट इसी में से जाएगा. RSH should be high, otherwise maximum current will go through the RSH. Okay. Then ID should be low. ID should be low. So IL should be maximum. IL should be maximum. RS small, RSH large. C. सीरीज वाला रेजिस्टेंस कम रखेंगे, शंट वाला ज्यादा. लीस्ट रिलायबल पावर प्लांट. लीस्ट रिलायबल पावर प्लांट सोलर. वैसे सोलर और विंड दोनों ही हो सकता है यार, वैसे विंड ज्यादा अनरिलायबल होगा मेरे हिसाब से. ओके, विंड विल बी द मोस्ट अनरिलायबल एज कंपेयर टू सोलर. नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ESE 2022. व्हाट इज नॉट रिन्यूएबल? न्यूक्लियर. इट इज नॉन रिन्यूएबल. What type of hydro turbine is completely embedded in the fluid and powered from the pressure drop? कौन सी टरबाइन पूरी तरह से पानी में डूबी हुई होती है और प्रेशर के कारण से चलती है? डी. बोथ इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन. A large hydro power station has a head of 324. Flow is given. Reservoir का area is given. Available power. So I don't care about the area. Flow is 1370. Height is 324. Assume efficiency to be 1 because I need the available power. Okay, कितनी पावर अवेलेबल है, अब कितना उसमें से यूज करो वो मैटर नहीं करता. That basically depends on your efficiency. This is the power available. Now how much of it you can use, that depends on your efficiency. Okay, ESE 2024. Which of the following statement is correct regarding superheater? In modern utility, high pressure boiler, more than 40% of the total heat absorbed in the generation takes place in the superheater. Less than 40%, less than 20%, less than 30%. तो A आएगा. More than 40% heat of the steam takes place in the superheater. स्टीम की जो हीटिंग है ना उसका 40% से भी ज्यादा सुपर हीटर में होता है. ठीक है, तो दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम टुडे. टुमारो वी आर गोइंग टू मीट अगेन फॉर अनदर सेशन ऑफ पावर सिस्टम एंड आफ्टर पावर सिस्टम आई विल कंप्लीट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग. तो आपके ज्यादातर सब्जेक्ट तो हो ही चुके हैं. मटेरियल इज कवर्ड, आपका measurement is covered, signal is covered, communication is going on. So tomorrow I'll bring another session of power system at 11:30. Thank you.